Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. We all are aware that parents and teachers are very, very important in the life of a child when the child is growing. It's not only when the child is growing, then only the parents and teachers are very important. They are important all through their life. But at the same time, because the children develop so many things in their personality up to the age of maybe 20, 25, and after that, those things which the children have imbibed with the help of their parents and their teachers and the surroundings, that becomes the part of their personality. So while I was thinking about it, a question came to my mind that are the parents and teachers performing the duties, or they are responsible for raising wonderful children, the ones who would be wonderful citizens of the world later on. So then I try to understand the difference between these two words, that is duty and responsibility. And what I found was that duty is an obligation to perform a task, whereas the responsibility is the act of accepting and performing the task. When I own that duty as my own, coming from myself and not necessarily being forced by somebody from outside. So that becomes a responsibility. Of course, duty might be a little bit part of responsibility, but responsibility is a broader term, whereas duty is a very specific term. Like if I take the case of a school environment, and whenever the classes have to change or one particular lesson gets over and the next lesson has to start, somebody has to ring a bell. So ringing that bell becomes the duty of that individual. Whereas the teacher who is teaching in the classroom, it's not only the duty, but the responsibility of the teacher that every child in the classroom is able to learn what is being taught. So if the teacher goes only to perform the duty, then it becomes probably a little narrower than when the teacher goes in the class as a responsible person to taking care of overall development of that child. So what I said, for duty, it is an obligation to perform the task, whereas responsibility is the act of accepting and performing the task. Once I accept that to perform that task, I become a responsible person for that particular situation, particular group, particular institution, or particular individual. So the parents and the teachers are really taking care of responsibility, not necessarily the duty. And if they will take it as duty, then it becomes an issue for me. So I would try to make everyone believe and everybody take parenting and teaching as to be a responsibility, not as duty only. So how do we really do that, and how do we make our children responsible citizens? Because we all say that we must raise responsible citizens of the world. And responsible citizens can be raised only in case if the children are allowed to take the responsibilities when they are growing up. And there are many opportunities which are to be created by the parents and by the teachers, where the children would own the responsibility, take the responsibility. They should not be dictated to perform certain tasks, means to do a duty, that a child has to follow a teacher, a child has to follow a parent. I mean, that's a very, very important thing. But when it comes to performing certain tasks, those tasks should be made as the act of accepting. The children should accept that task to be performed by them at all levels. And when I say at all levels, that is when the child of age 5, when the child is of age 7, when the child is of age 15, when the child is now not child, rather is an adult at the age of 20 or 25. Now, how can we do that? So that, as I said before, that whenever something is to be done by a child, it should be made sure that it is done by the child only, and not that you are forcing the child to do that. Rather, the child has accepted that, yes, I would perform this task. And whenever the child accepts that,
that I am going to perform that task, means we have enabled the child, we have given an opportunity to the child, or we have made the child aware of owning the responsibility. I can take some examples here before I really get into details of what can be different types of responsibility. तो जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जो मेड घर में काम करती हैं, देखिए मेड को हम रखते हैं और वी पे सर्टेन अमाउंट फॉर द वर्क विच शी डज एट आवर होम, टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन वी आर वर्किंग समवेयर और कुकिंग द फूड फॉर द चाइल्ड. तो आप देखें कि उस मेड की तो ये एक ड्यूटी हो जाती है कि वो बच्चे के लिए खाना बनाए, बच्चे को नहलाए या बच्चे का कोई दूसरा काम करे. वेयरएज जब माँ की बात आती है तो माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बच्चे को अच्छा खाना मिले और उस चाह से खाना मिले कि वो बच्चा अच्छा ग्रो हो. वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं वहाँ पे परफॉर्म कर रही है मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस बच्चे के प्रति. यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर को ही निभानी पड़ेगी, फादर को ही निभानी पड़ेगी, घर के बाकी लोगों को ही निभानी पड़ेगी. और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखेंगे. तो अगर हम इस बात पे आए कि फिर हम किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को सीखने दें या सीखने के मौके उनको हम प्रोवाइड करें, तो इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगा. इसमें एक एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की हो सकती है, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की हो सकती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की हो सकती है, स्कूल कम्युनिटी के प्रति बच्चे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. क्योंकि यहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं होगी, किसी की खुद के प्रति ड्यूटी नहीं, मैं कहूँगा खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी साफ सफाई का ख्याल रखना, ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है. इफ आई वुड टेक इट एज ए ड्यूटी इट वुड बिकम ए प्रॉब्लम, बिकॉज देन आई मे एट टाइम्स उसको ना निभाऊं. रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आदमी को निभानी ही पड़ती है और निभानी ही चाहिए. अगर मैं पहली बात करूं एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, तो उसमें ये बच्चे को हम आदत डालें. अटेंडिंग क्लासेस एवरी डे इज द चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाइल्ड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू गोइंग टू द स्कूल एवरी डे. और मैं जब कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगे. अब स्कूल जाना अच्छे लगने के लिए क्या होगा कि द टीचर्स, द स्कूल्स वुड हैव टू own this responsibility, making things that good in the school that the children would like to come to school every day. And the parents should also provide all possible help at home in such a manner that children want to go and attend the classes. Second is that when it comes to completing assignments, then the children must be encouraged to own this responsibility of completing the assignment on their own. It should not always be the help of the mother at home or the teacher in the school or some tutor somewhere. So it should be the responsibility of the child to completing that particular assignment. Similarly, when it comes to participating in different activities at school or in even if it is at home, then it should be the responsibility of the child to participate. And if you have to be responsible, then you must initiate it from within, to go and talk to the teacher or in charge or ask your parents that I have to take part in this particular activity. And then also prepare for examination, because in academics examination is a very important aspect of that. And when I say examination, I'm not necessarily for the final examination or during the session, but you are preparing yourself for examination by learning what you are supposed to learn. And whenever you own the responsibility of learning, then you have become a responsible student. So academic responsibility should be of the child. Of course, we must encourage the child to do that. Second is personal responsibility. Now, in this, we always say that self-discipline is the most important thing in individual's life. So here also, a child should be aware of the importance of self-discipline. So when it comes to self-discipline, it includes everything: getting up
early in the morning on time, then going to the school on time, then being punctual there in the classroom, completing the task on time. So these becomes very, very important things when it comes to self-discipline. So when the second thing is that child should be made responsible of taking care of the health. It should not be the responsibility of somebody else. जब बच्चा सुबह को जग गया है और जो बिस्तर है उसको ठीक करना, उसको बनाना, ये भी एक बच्चे की जिम्मेवारी होनी चाहिए. अपने सामान को ठीक जगह रखना, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड. तीसरी बात जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी, वी कांट लिव इन दिस वर्ल्ड अलोन, वी हैव टू लिव इन ए सोसाइटी. सो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो. अब मान लीजिए आप टीम वर्क की जब बात आती है, हम लोग जब ग्रुप में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी सबके वेलफेयर के, सबका ध्यान रखने की है. एनवायरनमेंट के प्रति हमारे बच्चों की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम एनवायरनमेंट को जितना अच्छा रख सकते हैं उतना रखें. तो मैं जितनी बातें आपको ये कही हैं कि भाई ये बच्चों को करनी चाहिए, ये हम करेंगे. मैं फिर कह रहा हूं कि ये मेरे बोलने से या आपके बोलने से नहीं होगा, ये हमें खुद को करना पड़ेगा. जब हम उस चीज को एक रोल मॉडल के रूप में बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना सिखाए सीख जाएंगे. अब चूंकि मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ रहता हूँ, वो स्कूल भी आते हैं, या इवन मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो उनकी एक जिम्मेदारी स्कूल या कॉलेज कम्युनिटी के प्रति भी है. मतलब उनके साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन बच्चों का ख्याल भी रखना, उन बच्चों का ध्यान भी रखना. जो स्कूल या कॉलेज की जो चीज़ें हैं, मान लीजिए कुर्सी मेज है, बाकी ट्यूबलाइट है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, या डेस्कटॉप है, या कुछ भी चीज़ें जो बच्चे यूज करते हैं, गेम्स फील्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना ये बच्चों की ड्यूटी नहीं हो करके उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज हमें आगे बढ़ाने में, बेहतर बनाने में हमारे काम आ रही है. चाहे वो जीवित हैं या निर्जीव हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आजकल सुनता हूँ कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो छोटी सा भी कोई काम ज़्यादा मिल जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओन ही नहीं करना चाहते. इतना पैसा मिलता है तो इतना काम करें, उतना पैसा मिलता है उतना काम करें. वो ड्यूटी के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में थोड़ा कम ले रहे हैं. तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम रूप में हम ज़्यादा नहीं लेंगे या ड्यूटी के रूप में, तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा होएगा, टेंशन ज़्यादा होएगा, हम काम छोड़ भी देंगे या उसमें स्ट्रेसफुल रहेंगे. जिस दिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे टू परफॉर्मिंग दैट टास्क, उस दिन हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और हम कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे. So it is the responsibility of the parents and teachers making sure that our children are not deprived of those opportunities which develop them as responsible citizens. अगर हम कहाँ गड़बड़ करेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां बच्चे को करना चाहिए, बच्चा मान लीजिए एक असाइनमेंट नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो बच्चा दोबारा कोशिश करे, थोड़ा टाइम निकाल के कहीं से टाइम बचा करके उसको कोशिश करे, ना कि उसकी जगह कोई और बैठ करके उस असाइनमेंट को कर दे. क्योंकि फिर जैसे किसी और ने असाइनमेंट किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तो ड्यू थी नहीं, और बच्चे को भी हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं करने दी. तो ये मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से और टीचर्स से कि बच्चों को जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे पाएं सीखने की और उस टास्क को परफॉर्म करने को ऑन करने की, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. जब जब बच्चे किसी टास्क को चाह करके करना चाहेंगे, जब ये उनके दिमाग में आ जाएगा, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट मियरली माई ड्यूटी, उस वक्त में आप देखिए बच्चे उसको एंजॉय भी करेंगे, बच्चे उससे सीखेंगे भी, और बच्चे बेहतर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बनेंगे जो जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ों का बाद में जाकर के बहुत ख्याल रखेंगे. एंड दिस वर्ल्ड विल डेफिनेटली बी ए बेटर प्लेस टू लिव फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, दैट इज़ व्हाट द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज. एंड एजुकेशन इज नॉट ओनली इन स्कूल, education is everywhere, at home, on road, in a mall, in a restaurant, everywhere. So wherever the children get opportunity to own the responsibility, allow them, give them that option of owning that and becoming a responsible citizen. So with these words, I would like to say thank you to all of you, and I hope we would make sure that our children
are not deprived of those opportunities where they learn to become responsible. Thank you very much. God bless us all.